जय जगन्नाथ। वेलकम टू MatSciOdia। समस्त को आज सेशन को स्वागत। सबुदिन भली आज भी आम नहीं आसो टार्गेट 90+ सीरीज रो MCQ सीरीज जोठी आम आज देखा केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी आम माने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ी सारी जो माने तुम माने देखि परिबो जे सॉल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी रही हमर प्ले लिस्ट रे टार्गेट 90+ सीरीज रे तो तुम मैंने सेठू सॉल्यूशन चैप्टर एमसीक्यू कवर कर परिबो। एबे हमें देरी न करी आरंभ कर दबा हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो कोन रहिछि एमसीक्यू सीरीज। तो ता पूर्व हम देखिबा आज रो कोट द स्मॉल एम इज ए क्राइम हैव ए ग्रेट एम। तो तुमको जदि जीवन रे सफल व्यक्तित्व होबार अछि ताले गोटे छोट एम नेले चलिबोनी, ताले गोटे बड़ लक्ष्य नब आ से बड़ लक्ष्य को साधन करिया पई जीवन रे सबुले अध्यवसाय करिवो। कठिन साधना एवं निरवच्छिन्न भाव साधना करने द्वारा ही सिद्धि लाभ होता है। एमती नुह जे जेकोसी आम गोटे सफल व्यक्तित्व देखू से माने गोटे दी दिन रे सफल हो जाए ना, निरवच्छिन्न भाव अध्यवसाय से करि तेणु सी सफल होती। तो प्रथमे आम प्रथम क्वेश्चन को जीवा। फर्स्ट क्वेश्चन आम रोचे जे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी 1 कूलम चार्ज रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रही 2025 रो क्वेश्चन। ऑप्शन ए 6.25 × 10⁻11, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻19, ऑप्शन सी 6.24 × 10⁻18, ऑप्शन डी 5.46 × 10⁻29। तो यार जदि हमें सठिक उत्तर जानिबा कोले हमकु प्रथमे फिजिक्स और केमिस्ट्री गोटे नॉर्मल नॉलेज को देखियो पड़ियो। नॉर्मल नॉलेज कोन ना समस्त जानि चंती कोन जानि चंती समस्त बा ना गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होची 1.6 × 10⁻19 कूलम। किए गोटे भाबुथिबे सर आमे तो केमिस्ट्री स्टूडेंट बा साइंस स्टूडेंट जी तो आर्ट स्टूडेंट से माने केमति जानबे से माने एबे जानबेनी से माने 3 वर्ष पर जेतो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबे सेतोले निहाती भाबे जानबे जे गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होची 1.6 × 10⁻19 कूलम दैट टू माइनस चार्ज गोटे पड़ी जीवो। सो 1.6 × 10⁻19 कूलम रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिची नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 ताले 1 कूलम रे केतोटी रहिबो जेमि आमे कहउतले जे 5टी पेन रो दाम 10 टंका ताले गोटे पेन रो दाम केते 10/5 सेमती number of electron present in 1 coulomb will be 1 divided by 1.6 × 10⁻19 संख्यक इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो यार वैल्यू जदि हम देखिबा 1/1.6 आसीबो 0.624 49625 भी के कहते इंटू 10 टू पावर -19 टा ऊपर पळेले 19 हे जिवो। याको पुणी रीअरेंज कर देले केते हिजबो 6.24 × 10⁻18। सो सठिक उत्तर हबो 6.24 × 10⁻18 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखिनबा कोन अछि आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next is the question number 2. Equivalent conductance of sodium acetate, sodium chloride, sodium hydrochloric acid at infinite dilutions are 224, 38.2, 203 ohm inverse centimeter square gram equivalent inverse respectively at 298 Kelvin. The equivalent conductance of acetic acid at infinite dilution is this ohm inverse centimeter square gram equivalent inverse kete hobo? And the options are 288.5 ohm inverse centimeter square gram equivalent inverse 2025 ର question, 288.8 ohm inverse centimeter square gram equivalent inverse, option 3 388.8 ohm inverse centimeter square gram equivalent inverse, option D dash 59.2 ohm inverse centimeter square gram equivalent inverse कोटा हवा सठिक उत्तर। जदि हम देखिबा एठी कोन रहिछि थ्योरी एटा होछि कोलारुस लॉ र थ्योरी। जो माने कोलारुस लॉ पढ़ी ना से माने मु कहि दे जे कोलारुस लॉ कोन कहउछन ना कोलारुस states that the lambda naught for any substance that may be a strong electrolyte or weak electrolyte is the summation of the contribution of corresponding ions. So cation कथा जो देखिबा lambda naught A plus lambda naught B minus it will contribute to lambda naught AB। ठीक अछि। This is your lambda naught that is your equivalent conductance हे पारे बा molar conductance at infinite dilution। at infinite dilution माने zero concentration। ठीक अछि। पानी जोटे अपर्याप्त मात्रा रे थिबो सेटे concentration small ही रहयो। So lambda naught ताहले हमर एठी डाटा अनुसार जे देखिबा lambda naught for sodium acetate that is CH3COONA
is given as 224. Shortcut बाहर करो lambda naught CH3COO minus plus lambda naught Na plus. This is your data. Then how can we see that lambda naught for CH3CON ହେଲା next ଆସୁଛି ଆମର sodium chloride NaCl. This is କେତେ 38.2. ଆକୁ ବି ବାହାର କର Kohlrausch law ପକା answer ବାହାର କରିବ Na plus Cl minus. Then ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା କାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଛି ତୁମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ lambda naught HCl. यार भ्याल्यୁ କେତେ 203. तो सॉल्व कर lambda naught H plus plus lambda naught Cl minus. अच्छा ଏତିକି डाटा जो ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର डाटा କଣ ପଚରା ହେଇଛି डाटा ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ଏସିଟିକ एसिड माने हमको दरकार एसिटेट आयन और H प्लस आयन तो तमे प्रथमे नजर करो कोड रहिछि एसिटेट आयन एइठे लुचिकी बसिछि लुचिछि एसिटेट आयन लुचिछि रे लुचिछि प्रोटॉन एठी लुचिछि दीटा जिंस एठे लुचिकी रहिछि हेले आमे मेट्स ओडिया रो जो माने भी स्टूडेंट से माने कोन कर दे खोजिकी बाहर कर दे कारण एटा होछि कोलर्स लॉ ताहाले देखिबा आमे कोटा दीटा मिसेबा कोटा को फेडिबा तो जदि मु प्रथमटा को इक्वेशन 1 सेकंड टा को इक्वेशन 2 थर्ड को इक्वेशन 3 देबी ताहले मते इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करियो पड़े तुम पछारियो काहे कि सारा इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करले कारण हमको ए दीटा ही दरकार किंतु बाकीटा हमको दरकार नै तेनो एडी को इक्वेशन 2 माइनस कर देले हमर कोन आसीबो ना H plus lambda naught CH3 COO minus plus lambda naught H plus lambda naught Na plus lambda naught Cl minus. एथि होला 1 plus 3. माइनस कर दवा इक्वेशन 2 कले lambda naught Na plus minus lambda naught Cl minus लेफ्ट साइड रे. एबे देखिबा यार वैल्यू गुडा को कोन नंबर ना 224 इक्वेशन 1 रो वैल्यू इक्वेशन 3 रो वैल्यू होची 203 इक्वेशन 2 रो वैल्यू होची 38.2 ठीक अछि तो अब ऐड कर देले जदि हम देखिबा नॉट लैम्डा नॉट Na plus कटि जा Cl minus कटि जा बंचिला के lambda naught CH3CO minus plus lambda naught H plus so it will become as lambda naught acetic acid that is CH3COOH यार वैल्यू ताले केते ना 4 3 मिसले 7 2 2 4 तो 427 minus 38.2 सॉल्व करो सॉल्व करले 10 रु 2 गले 8 10 रु 2 गले 8 तापरे आसुची 16 रु 8 गले 8 10 रु 2 गले 8 16 रु 8 गले 8 11 3 गले 8 388.8 तो 8 8 8 388.8 यार सठिक उत्तर कौन देखिबा ना राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यस सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ठीक अछि ମୁଁ ସବୁ इरेज कर दोची तो माने आशा करछि लिखि देथिबो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ ऑफ molten aluminum oxide ଆମେ କଣ ନେଲେ ନା molten aluminum oxide ନେଲେ କେତେ ନେଲେ ନା 1 मोल ନେଲେ ठीक अछि ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଫାରାଡେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ओके तो ऑप्शन रही 2 Faraday 3 Faraday 4 Faraday 6 Faraday and the question has also came in 2025 again so हमें जो देखिबा कौन रही ना 1 मोल ऑफ Al2 aluminum oxide फार्मूला कौन रो Al2O3 aluminum oxide एठो हमें कौन पाइबा ना 1 मोल ऑफ aluminum ठीक अछि सो एठो एति पाइबा aluminum oxide को आयनाइज करबा कौन हो 2 आलू 3टा प्लस 3O2 गुट दीटा माइनस बुझिला कारण एल्युमिनियम दीटा थिबार 2 लेखा हला गोटे एल्युमिनियम रा चार्ज होची 3 प्लस तेनो 3 प्लस तीनटा ओ थिबार 3 लेखा हला गोटे ऑक्सीजन रा चार्ज होची 2 माइनस तेनो 2 माइनस ठीक अछि किंतु हमहु केवल दरकार एटा ही तो गोटे मोल Al2O3 रु हमहु केतेटा मिलुची ना 2 मोल Al3 प्लस मिलुची ध्यान देकी देखो तो गोटे मोल Al2O3 रु 2 मोल Al3 प्लस मिलुची
ताले एठी आमे देखिबा ना aluminium 3 plus ରୁ aluminium ए करिया पई एठी आमे कोन करियो पड़े ना 3 इलेक्ट्रॉन दबा पड़ियो aluminium 3 plus 3 electron gives rise to aluminium अच्छा aluminium 3 plus किंतु हमर एठी 2 अछि तेनु होल रे मु 2 मल्टीप्लाई कर देली बुझिला ताले कोन बेटा ना 12 3 plus 2 2 3 की 6 6 electron gives rise to 12 gives rise to 12 ताहले हमको एटी कोन कहछि ना how many farad of electricity is required to obtain 1 mole of aluminum हमको केते मोल aluminum दरकार 1 mole तो जदि हम देखिबा एटा 6 मोल इलेक्ट्रॉन 6 मोल इलेक्ट्रॉन माने मने रखो सब बेले दैट इज योर 6 फैराडे तार चार्ज केते 6 फैराडे तो 6 फैराडे यूज करके हमें केते मोल एल्युमिनियम पाइले 2 मोल ताले गोटे मोल एल्युमिनियम पाइबा को केते दरकार 6 रो आधा 3 फैराडे सो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी 3 फैराडे ठीक अछि देखिबा सठिक उत्तर कोन रहै छी ऑप्शन नंबर बी भी रहै छी ओके Next, in an electrochemical cell, the free energy change is related to EMF of the cell H. 2024 रे 21 रे 20 रे माने बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चन भाबी नियो del G is equal to E naught cell del G is equal to NF E naught cell del E is equal to minus NF E naught cell del G is equal to E naught cell by NF এবং সঠিক উত্তর যদি আমি দেখিবা ইয়া হবে অপশন নম্বর সি del G is equal to minus NF E naught cell what is del G del G হচ্ছে gives free energy change in free energy ଆଉ E naught হচ্ছে তোমার E naught cell হচ্ছে তোমার কোন the EMF of the cell at standard temperature and pressure ଆଉ F stands for Faraday जोटा कि 96500 coulomb N is the number of electrons involved 5 number the unit of specific conductance is there कौन हबो ओम सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने कौन ओम कहले ओम स्वाहा ना कि ओम स्वाहा प्राय लोक समस्त जानछन जे ओम माने जो माने भी हमर एठी हमर हिंदू वा सनातन धर्म रे जो माने भी ब्राह्मण माने अछंदी केवल गोटिए मंत्र शिखिछंदी ओम स्वाहा अरे ना ना सेटा मंत्र नुह सेटा साधारणतः कोन कह जे सेटा आहुतिर यज्ञ यज्ञ समान जिंस तेनो ओम परे जहा भी हेले गोटे लागे कोन ओम परे जहा भी हेले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम रांग रामाय नमः एभलिया किछि भी मंत्र पूर्व ओम लिखा जाए ओम जय जगदीश हरे तो से ओम तो एबे हमें देखिबा एठी किंतु हमें देखिबा हमें रेजिस्टेंस विषय देखिबा ओम ओम कहले जे R is directly proportional to L and inversely proportional to A तो ओम को कथा को नेकी जने कहले हो ताले ठीक है तम कथा ताले R is equal to rho L by रो माने कोन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आउ जने कहले जे मु रो रो इनवर्स को मु कोन कहबी कापा ताले कापा रे एक्सप्रेशन कोन आसीबो एठू kappa will be equal to R 1 by R into L by A 1 by R माने conductance multiplied by cell constant conductance multiplied by cell constant what is conductance होची resistance रो inverse आ कोन मन मन भाबिलो कि conductance होची resistance रो inverse resistance रो inverse माने तार यूनिट कोन हबो ओम इनवर्स अच्छा सेल कांस्टेंट यूनिट कोन हबो सेंटीमीटर इनवर्स तेनो एटा कोन हबो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर which of the following reactions occur at cathode during electrolysis reduction oxidation dissociation displacement कहि रखे गोटे इलेक्ट्रोलाइसिस रे का भितरे कोन होय ना एनोड थाए कैथोड आडकू केटायन आसे एनोड आडकू एनायन आसे और से दिटा को हमें कोन करन बैटरी रे कनेक्ट करी रखंदी बैटरी रो पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कनेक्ट हुए नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड रे कनेक्ट हुए आ ताको गोटे जार भीतर रखि दिया की जार दैट इज योर रिएक्शन चैम्बर बोली कि हमें कहू बा रिएजेंट चैम्बर भी कहू ता भीतर रिएजेंट थाए रिएजेंट रो एनायन पार्ट उडा एपड़ को जाए कैटायन पार्ट उडा एपड़ जाए तेणु कैथोड तार आडकू कैटायन जाए एनोड आडकू एनायन जाए
आ एनायन जाएगी इलेक्ट्रॉन लॉस करे तेणु एठे कोन हुए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोठी एनोड रे सोडा को जिवो ऑक्सीडेशन। अच्छा ताल यार अल्टरनेट एठी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जोटा को हमें कहबा रिडक्शन। जो माने पढ़ी ना हो से माने देखि नियो कारण ए जिंस से माने को पई भी काम रे आसीबो बिल्कुल। तो कैथोड रे कोडा हबो ना रिडक्शन कैथोड रे सबले रिडक्शन हबो इंपोर्टेंट पार्ट। एनोड रे ताले कोन हबो ऑक्सीडेशन। So option is सठिक उत्तर। A dilute solution of Na2SO4 sodium sulfate is electrolyzed using platinum electrode. The products at cathode and anode are O2H2, O2NaOH, NaS2, SO2, H2। तो हम कौन ने ली ना डाइल्यूट सॉल्यूशन Na2SO4 Na2SO4 को आयनाइज करो कौन दबो 2Na प्लस then SO4 2 माइनस पुणी वाटर अच्छी ना वाटर को आयनाइज करो से कौन दबो H प्लस OH माइनस। एबे हमर रूल अनुसार जे कोटा आगो जीव लिकेकेट नामांगा आलूजन क्रोफिर सोना पाव फेन को तो आजकल दिया लाने सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम एटा होची ट्रिक मो क्लास रे पढ़ाई छी। तो सोडियम टू अधिका डिस्चार्ज रेट होची हाइड्रोजन रो तेनो हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो। सिमिलरली SO2 माइनस रो अधिका डिस्चार्ज रेट होची OH माइनस रो तेनो OH माइनस हो तेनो एट ए नोड कोन हबो ना 4OH माइनस will gives rise to 2H2 plus O2 plus 4 electrons. What is it? Cathode at cathode कौन हबो ना H plus will gain electron, so 2H plus will gain 2 electrons and it will convert it into H2 gas ହେଲା। सो सठिक उत्तर हबो कौन कैथोड रे H2 गैस बाहरिबो एनोड रे O2 गैस बाहरिबो तेनो ऑप्शन नंबर ए जोडा कि हमर एठी ऑप्शन नंबर ए रहिछ। तापर देखिबा एटा क्वेश्चन दा के 2022 रे तमे प्रत्येक क्वेश्चन नोट कर दियो। The correct order of equivalent conductance at infinite dilution among LiCl, NaCl, KCl is LiCl greater than KCl greater than NaCl, KCl greater than NaCl greater than LiCl, NaCl greater than KCl greater than LiCl, LiCl greater than KCl greater than NaCl। तो सठिक उत्तर होची कौन देखिनवा ना ऑप्शन नंबर बी। तुम कहो सर हमें एटा किछि बुझी पालो ना बुझन बुझिया पे हमें अछि ना। तो equivalent conductance at infinite dilution of LiCl, NaCl, KCl जो देखिबा तीन जगह होची strong electrolyte। strong electrolyte रो हम जो देखिबा माने conductance केमने हम जानिबा it depends upon the three factors that is your it depends upon the three factors that is the ionic character covalent bond। तो जेते आयनिक कैरेक्टर हबो से कोन हबो सेते भलो भलो कोन हबो सेते भलो तार कंडक्टेंस अधिक आसीबो। तो सेते भलो तार कंडक्टेंस हबो। आयनिक कैरेक्टर हमें कहा का ऊपर फैक्टर ऊपर डिपेंड करे। आयनिक कैरेक्टर तुम माने जब जानिथिबो फाजन्स रूल थिला फाजन्स रूल रे पढिथिलो कोवेलेंट कैरेक्टर तार उल्टा होची आयनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर रा रूल थिला जे गण थिला ना 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तापर थिला जे लार्जर एनायन नेक्स्ट थिला स्मॉलर केटायन। एडी किंतु उल्टा हबो एटा थिला कोवेलेंट कैरेक्टर दिस इज योर कोवेलेंट कैरेक्टर पाई एटा केमिकल बॉन्डिंग रे थिला क्लास 11 रे बर्तन मु पढौची चैप्टर को भी। आयनिक कैरेक्टर रे कोन हबो ना 18 इलेक्ट्रॉन न होई कि 8 इलेक्ट्रॉन हबो। लार्जर एनायन बदल रे एटा कोन हबो ना स्मॉलर एनायन ने जिवो स्मॉलर एनायन को चूज कर दिया जिवो। केटायन लार्जर बदल रे कोन ने जिवो ना सॉरी स्मॉलर बदल रे कोन ने जिवो ना लार्जर केटायन। So cation should be larger. This will gives rise to your ionic character. एटा कोन दबो ionic character। जहार जते ionic character अधिका सी सेते कंडक्टेंस दबो आ कोन ताले ionic character एबे देखिबा कहार यदि देखिबा LiCl, NaCl, KCl तो एटे फरक केवल कोडा रहिछि ना फरक होछि केटायन।
आमको देखिए पड़ो केटायन कोडे सब लार्जर कोठी केटायन ना पोटासियम तेणु पोटासियम सब अधिक तापर सोडियम क्लोराइड तापर LiCl तो देखि नबा यार सठिक उत्तर कौन ऑप्शन नंबर बी KCl then greater than NaCl greater than LiCl ठीक है एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 रे क्वेश्चन the conductivity of n by 10 solution at 20 degree celsius is 0.0212 ohm inverse centimeter inverse and the resistance of the cell containing the solution at 20 degree celsius is 55 ohm the cell constant is dash 4.616 centimeter inverse 3.324 centimeter inverse 1.166 centimeter inverse and 2.173 centimeter inverse कौन डाटा दिखाई देखो n by 10 KCl solution कहछि माने एटा नॉर्मलिटी कहछि n by 10 1 by 10 टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस जोटा कि हम दरकार है ना फोपाड़ी दियो टेम्परेचर को फोपाड़ी दियो लिखि जल्दी जो टेम्परेचर को फोपाड़ी दियो खाता को फोपाड़ी दबनी एग्जाम हॉल रे खाता को फोपाड़ले एग्जामिनर सॉरी इनविजिलेटर तम ऊपर बिगिड़ी एमपी कर दे कंडक्टिविटी जदि हम देखिबा कंडक्टिविटी रो फार्मूला कोन कंडक्टिविटी माने होची तुमरो एडे kappa this is your kappa is 0.0212 ohm inverse centimeter inverse and resistance होची केते resistance is equal to 55 ohm cell constant formula अनुसार kappa will be equal to 1 by r that is your conductance multiplied by cell constant already हम पढ़थिले so cell constant will be equal to kappa multiplied by r that is 55 multiplied by 0.0212 केते आसीबो मल्टीप्लाई कले मते तो लागुची एटा 1.166 आसीबो बोली देखिनो वा सठिक उत्तर कोन यस 1.166 सेंटीमीटर इनवर्स तुम कहबे सर आपण एडे ओड आंसर केमि कहले देखो 55 अछि एडे 2 अछि सो 55 * 2 माने 110 पाखा कि आसीबो सो 110 माने 116.6 आसीला से पाखा कि एम दे कैलकुलेशन 1.166 कैलकुलेशन करिया द्वारा एटा प्रैक्टिस हो जाय द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस 69500 कूलम 965 कूलम 1 फैराडे देन 2 फैराडे मोडा ऑलरेडी करिछि जे 1 फैराडे जोटा कि 96500 कूलम ठीक अछि 11 number the amount of electricity required to produce 1 mole of copper from copper sulfate solution will be 1 Faraday 2 Faraday 3 Faraday 4 Faraday कौन कह जायछि ना 1 mole copper sulfate solution रहछि एडो हम कौन मिलियो ना कॉपर दरकार amount of required to produce 1 mole of copper from copper sulfate solution so हमको दरकार 1 मोल कॉपर दरकार तो तुम क्वेश्चन को भलो भाबे बुझिबो सेठी कोन कहै छी 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट रु कॉपर बाहर करियो कहै छी किबा कॉपर सल्फेट रु 1 मोल कॉपर कहै छी एटा बहुत इंपोर्टेंट तो 1 मोल ऑफ कॉपर बाहर करिया अछि कॉपर सल्फेट केते रहउची हमको किछि फरक पड़ो तो कॉपर सल्फेट को आयनाइज करले कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस हमर किछि कामर नाही कॉपर 2 प्लस कथा देखिबा कॉपर 2 प्लस रे मात्र दुईटा इलेक्ट्रॉन मिसिले से कोन हो कॉपर सॉलिड हे जिवो तो दुईटा इलेक्ट्रॉन जेतोले एटा 1 मोल थिबो ये भी कोन हे जिवो 2 मोल इलेक्ट्रॉन माने 2 फैराडे ठीक अछि सो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी देखिबा सठिक उत्तर कोन अछि ऑप्शन नंबर बी तापर जिबा द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज ऑलरेडी अभी हम डिस्कस करथले कोन बस ठीक उत्तर सेंटीमीटर इनवर्स दिस आर क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहज क्वेश्चन ना which of the following solutions of KCl will have the highest specific conductance 0.001 normality 0.01 normality 0.001 normality 1.0 normality KCl होची गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट केस रे कोन होए ना कंडक्टेंस केमदी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जोडा रहउची स्पेसिफिक कंडक्टेंस खास कर स्पेसिफिक कंडक्टेंस नॉट योर इक्विवेलेंट बा मोलर कंडक्टेंस नो सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस depends upon concentration kappa directly depends upon concentration so concentration जहार अधिका तार kappa value अधिका तो 1.0 जेतो सबटो अधिका ऑप्शन नंबर डी होची सठी उत्तर तापर हम जिबा which of the following solutions of KCl will have the highest specific conductance सेम क्वेश्चन हम ऑथर लिख देछि टाइप कर देछि ओके
The relationship between chemical equivalent and electrochemical equivalent is chemical equivalent C and electrochemical equivalent is C. बर्तमान ये यूज करा chemical equivalent पाई E और electrochemical equivalent पाई Z. कौन हम ना हम जानते Z is equal to E by 96,500 कोड अच्छी कि नहीं ताले हम देखिए बाजे E is equal to कौन हम Z into 96,500 कोड अच्छी ऑप्शन नंबर B अच्छी. So सटीक उत्तर होची ऑप्शन नंबर B. Next, in an electrochemical cell, oxidation occurs at एबे किस समय अगर कोई anode तो सटीक उत्तर होगा anode. Find the number of coulombs are required for conversion of 1 mole of MnO4 minus to 1 mole of Mn2 plus. तो MnO4 minus to Mn2 plus. MnO4 minus माने देखिए manganese रो oxidation state केते x plus 4 into minus 2 will be equal to minus 1. So x plus 4 into minus 2 that is equal to minus 1. ताले एटा केते आसबो ना x minus 8 is equal to minus 1. So x is equal to minus 1 plus 8 that is x is equal to plus 7. और Mn2 plus माने plus 2. So Mn plus 5 रू sorry plus 7 रू plus 5 करिवार अछि. केते मोल कहैछि कि हां 1 मोल ऑफ Mn2 plus sorry 1 मोल ऑफ Mn2 plus. So Mn7 plus रो Mn2 plus करिवार अछि 1 मोल रो. ताले मु एबे कोन करबी केते इलेक्ट्रॉन नेबी ना 5टा इलेक्ट्रॉन नेले ये कोन है Mn2 plus. ओके ताले एडा 5 मोल इलेक्ट्रॉन 5 मोल इलेक्ट्रॉन माने हमर केते this is 5 farad. So सटीक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी. आंसर नंबर सी होची 5 farad. The unit of molar conductance is molar conductance रो यूनिट कोन एटा 2020 इंस्टेंट रे आस्तिला. molar conductance रो यूनिट कोन molar conductance formula हम कह दिए lambda m is equal to कोन formula न kappa into 1000 divided by molarity. Kappa into 1000 by molarity. And what about lambda equivalent? That is equivalent conductance is equal to kappa multiplied by 1000 divided by normality. हला so molarity रो यूनिट जे देखिबा molarity रो यूनिट होची मोल लीटर इनवर्स यार यूनिट होची ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स. अच्छा लीटर को पुनी सेंटीमीटर रे कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब रे कन्वर्ट कले कोन हो कापा रे यूनिट होची ओम इनवर्स दैट इज साइमन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स 1000 रो तो किछ यूनिट नै मोलारिटी रो मोल लीटर इनवर्स किंतु लीटर को जेतबे हमें सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करबा गोटे लीटर होची केते सेंटीमीटर गोटे लीटर होची तुमरो गोटे लीटर होची सेंटीमीटर क्यूब ताले एटा सेंटीमीटर क्यूब पला. सिमिलरली ताले ए जिंसटा कोन हो ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब दा ऊपर को पळेबो तो एटा डिवाइडेड बाय मोल मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर हिजो. सो सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर माइनस 1 तो ए जिंसटा कोन हो ना ओम इनवर्स multiplied by centimeter cube minus 1 centimeter square gram mole inverse by mole inverse molarity ताले equivalent constants कौन हो ना ohm inverse centimeter square gram equivalent inverse. तो यार सटीक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी ohm inverse सॉरी ऑप्शन नंबर सी बाउंड ले हैं ऑप्शन नंबर ए. यस यस देखो मु जने आंसर जानी कि भी बावले जाउची तो मन रख ध्यान दे कि देखुथिबो जे ऑप्शन को ऑप्शन ता दिया हिच ठीक अछि बावले गले बहुत हटटा हबो पुरे. Electrolytes when dissolved in water dissociates into ions because they are unstable. The water dissolves them. The forces of repulsion increases. The force of electrostatic attraction are broken by water. कोथि पई कौन होची ना वाटर रे जेतबेला हमें इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करछे से आयन रे कन्वर्ट होची कोथि पई बिकॉज़ द फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आर ब्रोकन बाय वाटर. तो वाटर कौन करची जे सोडियम जो हमर इलेक्ट्रोलाइट भीतर सपोज सोडियम क्लोराइड नंबर सोडियम और क्लोरीन भीतर जो कौन रहची फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहची ताको भांगी दोची कि वाटर से केमिति भांगुची
कारण वाटर सोडियम सहित इंटराक्ट करछि, क्लोरीन सहित इंटराक्ट करछि, जद्वारा क्लोरीन सोडियम भितर थिबा बॉन्ड भांगी जाउछि। तो तमे एमिति भाबो जे तमर दी जण सांग अछन, ठीक अछि। तमर सांग होछि राम, आउ जनर सांग आउ जणे आउ गोटे सांग होछि सपोज मधु। दी जनकर दिले सांग राम और मधु। राम और मधुकर दीटा ये रामर डिग्री बेस्ट गोटे होछि श्याम, माने रामर नॉर्मल दोस्त श्याम, मधुर सपोज मंगल। एबे कथा हला कोन ना श्याम और मंगल भितर बहुत स्ट्रांग बॉन्ड अछि। एते स्ट्रांग हैला जे सेमाने राम मधु को पचले। बर्तन राम और मधु कोन कले, राम श्याम सहित इंटरैक्ट कला, तो श्याम बेसी समय मंगल सहित न देकी राम सहित देला टाइम। सिमिलरली मधु भी मंगल सहित टाइम देला, जद्वारा मंगल और श्याम सहित टाइम न देकी मधु सहित देला, जद्वारा श्याम और मंगल भितर थिबा बॉन्डटा धीरे धीरे राम मधु भांगी देले। ए सेम जिंस ये भी होची वाटर जो देम देखिबा सपोज एटा होची तुमर Na+ ना Na+Cl-, NaCl भितर बॉन्ड थिला सपोज इलेक्ट्रोलाइट, तो ये होची OH-, ये होची हाइड्रोजन H+, किंतु ये सिना ताको डाकी देले माने बॉन्ड कले नहीं, ताको टाणी ता सने इंटरैक्ट करिक रखि देले, आयन करी छाले सिना बॉन्ड कले नहीं। H+ कहला आ रहा है लेकिन बॉन्ड होने का नहीं, OH- कहला आ रहा है लेकिन बॉन्ड होने का नहीं। तो सोडियम OH Na+, OH-, Cl-, H+ ए बोले आयन रे कन्वर्ट हेला। तो सठिक उत्तर एटा डी हो। The electric charge for electrodeposition of gram equivalent of a substance is, गोटे ग्राम equivalent substance deposit करिया को कितने चार्ज दरकार? 1 ampere for 1 second, 1 ampere for 1 second माने जितोले Q is equal to 1 coulomb, that is 1 coulomb actually, कारण I 1 ampere and T 1 second, so 1 coulomb, 96500 coulomb. Now 1 ampere for 1 hour, 1 ampere for 1 hour माने हम जो देखिबा Q रो वैल्यू केते आसी, Q रो वैल्यू आसीबो 1 सेकेंड होची 1 आवर होची 3600, एडा 3600 सेकेंड 1 कूलम एडा नहले तो सठिक उत्तर होची 96500 कूलम, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 फैराडे हैला। 1 फैराडे देले ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस है कि फटफट की डिपॉजिट हो, आ 1 फैराडे देइनो चले जीवन जेमिति तमे घरे सपोज किए काम करथिबे, तमे ताकू जति पैसा जति जति प्राप्य दे देला से कम ढे कला, जदि प्राप्य देलेनी ताले मनटाको विश्वास करके सते दिन केते टका हजे देछि से बोले सबल बस्थिबो, तम काम भी भल रे करबो। व्हिच इज द स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? जिंक, क्रोमियम, S2, आयरन। जदि हम देखिबा स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माने सबटु कम कहार E0 वैल्यू, तो यार फॉर्मूला था लिख के केट ना मांगा आलू जा। लिख माने लिथियम, मो सीरीज टा कह दोची लिख के केट ने मांगा आलू जान, क्रोफिर सोना पाऊ, हेन कुकोतो, हज कलिया, लाने सिल्वर, गोल्ड प्लाटिनम, ताले कौन हम ना सब कम जार तार E0 वैल्यू कम जार से प्रथम लिखा है। तो ये भीतर आइडेंटिफाई करियो हमर कोडा कोडा अछि, जिंक अछि, ओके, आउ कोन अछि क्रोमियम अछि, ओके, आउ के अछि हाइड्रोजन अछि, ओके, आउ के अछि आयरन अछि। तो सब लोएस्ट अछि जिंक, तेन जिंक होस्ट सब स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताले स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट अछि जिंक, स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ना हाइड्रोजन, जहार E0 वैल्यू कम ताको हम को रिड्यूसिंग एजेंट, E0 जार लिस्ट सब हला। तो एटी देखिबा ऑप्शन नंबर ए सठिक उत्तर। Faraday's law of electrolysis are related to atomic number of cation, atomic number of anion, equivalent mass of electrolyte, speed of the cation, जे भी जानची से जानची इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कारण Faraday's law कहउतले जे W is equal to Z by T and Z is equal to E by 96500 into IT। So कौन कहि परिबा दैट
The amount of substance deposited or liberated at electrode is directly proportional to the current passing through the electrolyte measured in coulomb. So this is equal to your, and which is equal to your ZIT, Z minus E by channel the constant to IT. So somehow it depends upon equivalent mass of electrolyte. Next, molten sodium chloride conducts electricity due to presence of free electrons, free ions, free molecule, atoms of sodium and chlorine. मोल्टेन सोडियम क्लोराइड माने आमे जदि सोडियम क्लोराइड को किछ समय पे कोन कर दो मेल्ट कर दो केमिति मेल्ट करबा नॉर्मली रखि दबो रखि देले से मेल्ट हे जो तमे देखिबो लूण घरे कोठी कोठी रखि देथिबो से 2 दिन परे से पानी देथिबो तमे कहबो मामा मामा मु लूण रखिथि मामा कहबे बाबा रे से पानी हेलानी ए पानी डाल नै जा पी देई पळे आसे this is due to atoms of sodium and chlorine. No, 3 ions. Sir. This is due to free ion. Ion थिबा जो जे कोनोसी गोटे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी सेतबेले कैरी करे जेतबेले फ्री आयन प्रोड्यूस हो आयन न होले जे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करि परिबो ना the unit of specific conductance unit एबे देखिले हमें ohm inverse centimeter inverse ohm inverse को हमें को Simon, so it is also written as Simon centimeter inverse kappa value. For a redox reaction to proceed in a cell, the EMF must be positive. EMF positive no hole redox reaction proceed over. तो कहबे सर यार प्रमाण दियंतु. Del G is equal to minus NFE not sir, right? आमेरा gives energy expression. मन रखो for a reaction जे कोनोसी गोटे reaction सेतेबेले proceed हे परियो जेतेबेले del G टा नेगेटिव हो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केबे भी नेगेटिव नो F केबे नेगेटिव नो तामने हम कहि परिबा जे NFE नॉट मस्ट बी कोन हे जो ना NFE नॉट माइनस माइनस कैंसिल हेले NF नॉट इज पॉजिटिव जेतु ए दिटा पॉजिटिव त E0 मस्ट बी पॉजिटिव बुझिला एटा प्रमाण सो E0 मस्ट बी पॉजिटिव मोल्स ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रेडिंग 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एटा ऑलरेडी करे दिले तो 6 फैराडे तो aluminium 3 plus 3 electron gives rise to aluminium. So it is 3 farad थाए तो हमर 1 मोल पाइचे जेतबेले 6 farad रहउछि सेतबेले केते मोल पाइबा ना 1 that is 2 मोल. So सठिक उत्तर होबा ऑप्शन नंबर A. This gram of fluorine can be prepared by the electrolysis of molten sodium chloride with 10 ampere current passed for 10 minutes. So यार formula होची W is equal to E by 96,500 into IT. IT पिला की हो So W is equal to E by 96,500 into IT. E ର value केते E ର value जदि हम देखिबा हमर कोन कहै छी ना केते ग्राम क्लोरीन दरकार क्लोरीन रो इक्विवेलेंट मास होची 35.5 divided by 35.5 divided by 6500 into IT I रो वैल्यू केते 10 एम्पियर टाइम केते 10 मिनिट गोटे मिनिट होची 60 सेकंड तो तेनु 10 into 60 पड़िगला टाइम दिस इज योर टाइम दिस इज योर I वैल्यू होला तो एग्जाम रे लिखिबो केमती ना I is equal to केते एटा तो MCQ वाला क्वेश्चन तो एटा सॉल्व करले 100 को एटा 100 कटि गला तो 35.5 into 60 divided by 95 so 35.5 multiplied by 60 divided by 965 ये सॉल्व करले केते आसीबो सॉल्व करले आसीबो 2.2 सो आंसर आसीबो हमरा 2.2 सठिक उत्तर हो 2.2. Which one of the following type of reaction occur at anode during electrolysis? Dissociation, substitution, reduction, oxidation. को प्रकार रिएक्शन हबो एनोड रे इलेक्ट्रोलाइसिस समय एवं यार सठिक उत्तर होची कोन ना ऑक्सीडेशन सठिक उत्तर होची ऑक्सीडेशन हबो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हैला तापर which solution has the highest conductivity कहार रहछि तो माने जो देखिबो एटी कंसंट्रेशन तो रहछि कि तीटा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हमें जानि छे NaCl होछि गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड होछि गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट सो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टिविटी हाईएस्ट थाए किंतु कंसंट्रेशन तार हाईएस्ट थिले तने यार सठिक उत्तर हबो
sodium chloride with higher conductance, sorry, higher concentration, that is 0.1 molar. So answer of option number B. Which is a strong electrolyte? एमान भितर strong electrolyte कोटा जदि देखिबा NaCl is the right answer. So option number C is the right answer. Electron flow in a cell from cathode to anode, anode to cathode, salt bridge or electrolyte. Electron flow in a cell from कोठु कोठे फ्लो हुए इलेक्ट्रॉन तो जदि आम देखा गोटे सेल भितर इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नाली किसी कहनी माने तुम ये बुझे एक्सटर्नाली कोठु कोठी फ्लो हुए इलेक्ट्रॉन ना एनोड टू कैथोड. ऑप्शन नंबर बी है ना. एनोड इन ए Daniell cell is this. Daniell cell रे एनोड कोटा कॉपर ना जिंक ना प्लैटिनम ना कार्बन. तो Daniell cell रे जदि हम देखा एनोड होची जिंक और कैथोड होची कॉपर. कैथोड होची कोन कॉपर. तापर देखिबा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबले कोन 0 वोल्ट. आंसर हो 0 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. Which factor does not affect electrolytic conductance? Electrolytic conductance माने ऊपर को फैक्टर किछि इफेक्ट पकाए. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, वोल्टेज अप्लाइड, कंसंट्रेशन. एवं यार सठिक उत्तर होची वोल्टेज अप्लाइड. केते वोल्टेज अप्लाइड करले सेटा कोनोसी इफेक्ट पकाए नाही. नेक्स्ट 34 नंबर देखिबा. Reduction involves loss of electron, gain of electron, loss of proton, gain of neutrons. Reduction माने आमे सबोले जानू जे gain of electron. ऑप्शन नंबर बी. ऑक्सीडेशन माने loss of electron. किस समय आगु हम डिस्कस करथिले. तापरे Kohlrausch is useful for calculating cell constant, limiting molar conductivity, EMF resistance. एवं यार सठिक उत्तर होची limiting molar conductivity. Which electrolyte shows maximum increase in molar conductivity on dilution? Dilution हेले कोठी maximum increase हो माने सबोले मन रखता हो dilution रे maximum increase सबोले weak electrolyte दिखाई था. weak electrolyte इटा कोटा ना एसिटिक एसिड सोडियम क्लोराइड KCl और HNO3 एमान सब strong electrolyte. So option number C होगा सठिक उत्तर. When concentration of electrolyte decreases, the molar conductivity increases. Molar conductivity increases. जे कोनोसी गोटे इलेक्ट्रोलाइट रो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुए ता सहित हम जे देखिबा अन्य कोन अन्य लैम्डा इक्विवेलेंट भी इंक्रीज हुए. किंतु स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रिमेंबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस. Whereas molar equivalent conductance and molar conductance generally increases with decrease in concentration of electrolyte. Next question. Salt bridge in a galvanic cell completes the electrical circuit, maintains electrical neutrality, prevents mixing of electrolytes, all of this. Salt bridge तुम जो देखिबो गोटे दुईटा सेल थिबो, दुईटा हाफ सेल थिबो, सेठी गोटे गोटे मेटालिक रॉड थिबो आ करेस्पोंडिंग सॉल्यूशन थिबो. तापर से माने गोटे बैटरी सहित कनेक्ट कर दे दिथिबो. ए दिटा को कनेक्ट करबा पई आमी गोटे यूज करू कोन एक्सटर्नली गोटे जिंस यूज करू सेटा को जे सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज कोन करे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करे. कारण सॉल्ट ब्रिज जदि न थांता ताले ए दिटा सिना वायर बाहर सिना कनेक्ट हिचन किन दिटा सॉल्यूशन कनेक्ट हि नथिला तेनो एक्सटर्नली कनेक्ट कला. हां मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. जदि एपटे केटायन अधिक आइ जिवो ताले से कोन करिवो सॉल्ट ब्रिज रो एनायन गुडा को बाहर करि पठेबो. सॉल्ट ब्रिज रे जो सॉल्ट रो एनायन थिबो ताको जा केटायन से मिसी की सॉल्ट रो कंसंट्रेशन कम देबो. एपटे जदि एनायन रो कंसंट्रेशन अधिक आइ जिवो बा केटायन रो अधिक आइ जिवो ताले से करेस्पोंडिंग केटायन को पठेबो. एवला कंसंट्रेशन को से ग्रेडियंट को मेंटेन करे. ठीक अछि लेफ्ट माने और राइट को. तो एडा भी हो. प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट दिटा के भी मिसी परिउनी. एडा राइट रहबो लेफ्ट रहबो. सपोज एपटे जिंक सल्फेट नहीं थिबो एपटे कॉपर सल्फेट नहीं थिबो ताले ए दिटा टोटली मिसिबो ना किंतु पूरा कंप्लीटली काम करियो. तनो यार सठिक उत्तर होची ऑल ऑफ दिस. तापर नेक्स्ट 39. इन ए galvanic cell oxidation always occurs at the electrode which has higher reduction potential, higher reduction potential, lower reduction potential, zero electrode potential and equal oxidation and reduction potential. oxidation सेठी हो जोटा कि एनोड थिबो जोटा होची एनोड.
एनोड रो सबले कौन थी ना रिडक्शन पोटेंशियल लो थी, लो रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सटीक उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जीवा ऑक्सीडेशन occurs at electrode with again same question lower reduction potential, rp stands for reduction potential। next question जीवा which statement is incorrect, conductance increases with temperature, strong electrolytes dissociate completely, molar conductivity decreases on dilution, resistance depends upon geometry। incorrect कोड़ा conductance increases with temperature, temperature बढ़िले conductance बढ़ी थाए हाँ कहीं ना आयन गुड़ाकर मोबिलिटी बढ़ता है, मोबिलिटी बढ़ले कंडक्टेंस बढ़े। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हुए हाँ। मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन हेले मोलार कंडक्टिविटी बेसिकली इंक्रीज हुए, ए स्टेटमेंटटा रॉन्ग, इंक्रीज हुए डिक्रीज होबनी। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऊपर जदि तुमे सरू तार नहीं थिवो तार रेजिस्टेंस आ गोटे मोटा तार नहीं थिवो तार रेजिस्टेंस अलग थाए, तेणु हाँ डिपेंड करे ऑप्शन नंबर सी ताले सटीक उत्तर। ठीक अच्छे 42 ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl सोडियम इज लिबरेटेड एट सोडियम क्लोराइड मोल्टेन नीचो मोल्टेन नीथिले कोन हबो आयनाइज के Na+Cl- हला ताले सोडियम प्लसटा कोठी सोडियम प्लसटा कोठी लिबरेट हबो इलेक्ट्रॉन गेन करिकी सोडियम हबो, तो ऑब्वियसली एटा इलेक्ट्रॉन गेन कला माने एटा कैथोड रिडक्शन है कैथोड ऑप्शन नंबर बी हम सटीक उत्तर। The EMF of a concentration cell becomes zero when electrodes are identical, concentrations are equal, temperature is zero, electrolyte is weak। concentration cell दीटा अच्छी ठीक अच्छे सपोज एपटे मु कॉपर सल्फेट नहीं एपटे मु जिंक सल्फेट नहीं ओके এটা কপার নেইছি এটা জিঙ্ক নেইছি एक्चुअली উল্টে লিখিয়া কথা এমনি লিখিলে কিছু অসুবিধা নাই। ইলেকট্রোড গুড়াক যেতবে আইডেন্টিকাল থিব বর্তমান কপর দুইটি জায়গা পটে এবে কপর নেই যাবে তাহলে ইএমএফ জিরো হব কি কনসেন্ট্রেশন দুইটি জায়গার 0.1 মোলার নিয়ে গেলি তাহলে জিরো হব কি টেম্পরেচর को जीरो कर देली ताहले जीरो हो कि इलेक्ट्रोलाइट वीक कर देली ताहले जीरो हो कि যদি আমি দেখিবা ইয়ার সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নম্বর বি when concentrations are equal concentrations are equal concentration যেতବେଳେ equal হবে EMF of concentration cell becomes zero when concentrations এই কোশ্চেনটা মতে টিকে ভুল থিলা বলে লাগুছি এটা concentrations are equal হবনি electrodes are identical যেটা হবে electrodes are identical as well as concentrations are equal both option A and B যেতବେଳେ হবে সেতବେଳେ হবে তেণু এটা গোটে অপশন নেই যে নন অফ দিস তেণু নন হবে সঠিক উত্তর यार सঠিক উত্তর নন হওয়া কথা কারণ সেতବେଳେ হবে না যেতବେଳେ ইলেকট্রোড গুড়াক আইডেন্টিকাল থিব তার সহিত কনসেন্ট্রেশন বি ইকুয়াল থিব দুইটি জায়গা হবার আছে গোটে হেলে হবে কারণ এপটে যদি আমি দেখিবা কপর কপর দুইপটে রখিলে অবশ্যই এটা কনসেন্ট্রেশন সেল কুহালা নট এ কনসেন্ট্রেশন সেল মানে जोटे इलेक्ट्रोलाइट কথা কুহাছে नहीं ठीक अच्छे उत्तर ठीक अच्छे हमारा नॉन ऑफ दिस हम ऑप्शन भूल अच्छे ए एंड बी যেতବେଳେ হবো তারপরে কোন কোশ্চেন which of the following has zero EMF এমান ভিতরে জিরো EMF এমান ভিতরে কাহার जीरो EMF কাহার না যদি আমি দেখিবা जिंक 2 प्लस रे कन्वर्ट होला कपर 2 प्लस कपर ठीक আছে कपर 2 प्लस रे कन्वर्ट होला किंतु कपर 2 प्लस पुनी कपर रे कन्वर्ट होला तो एठी देखिबा बी हबो सঠিক उत्तर जीरो EMF अन्य सबुडे जिंक 2 प्लस कपर रे कन्वर्ट होला जिंक 2 प्लस कपर हबनी इंडिया सेल एग्जिस्टिंग करबनी कि जिंक 2 प्लस टा कपर हे जिवो तापर S2 टा H प्लस रे कन्वर्ट होला कपर 2 प्लस टा कपर रे कन्वर्ट होला हां यार भी रहिछि पोटेंशियल ताले बी ही हम यार सटीक उत्तर प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं कि मु आउथरे डाउट बाहरी यार जीरो EMF बी वाला तो प्रीवियस क्वेश्चन रे हबो ए हबो सटीक उत्तर नॉट इलेक्ट्रोड्स
यार सठिक उत्तर हम ए कंसंट्रेशन इक्वल नुह इलेक्ट्रोड्स आर आइडेंटिकल तो केमती देख मुझे जिंक नहीं एपटे सपोज कपर नहीं एपटे मुझे नहीं कपर बदल में कौन नहीं जिंक नहीं दीपट जाक जिंक नहीं एटा मु 0.1 मोलार कपर सल्फेट ने जिंक सल्फेट ने राइट साइड रे 0.1 मोलार कपर सल्फेट ने सपोज इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग ने बट इलेक्ट्रोड कौन कले आइडेंटिकल सेम कर देली जिंक कर देली ताहले एज पर आवर कंडीशन कौन हम जो आम सर्किट को कंप्लीट कर दोचे और जो आम सॉल्ट ब्रिज पुट अप कर दोचे से कौन हो लेफ्ट साइड रे जिंक सल्फेट जो रही लेफ्ट साइड रे जो जिंक सल्फेट रही जिंक सल्फेट आयनाइज की जिंक 2 प्लस SO4 2 माइनस बर्तमान जो जिंक 2 प्लस SO4 2 माइनस है किंतु प्रथम जिंक टा कौन कर इलेक्ट्रॉन लॉस कर सो जिंक विल लॉस इलेक्ट्रॉन so zinc will be converted into zinc 2 plus and SO4 2 minus left side okay एठी कोन हो ना एठी जति हम देखिबा एठी इलेक्ट्रॉन आसी जीवो इलेक्ट्रॉन आसला पर धीरे धीरे कॉपर 2 प्लस टा कॉपर रे कन्वर्ट हो राइट क्वेश्चन ना भाई ना क्वेश्चन ना ठीक थिला मो इलेक्ट्रोड्स आर आइडेंटिकल कारण एठी इलेक्ट्रोड आइडेंटिकल हेले बे सेल रिएक्शन सेम माने जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस एंड जिंक 2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू जिंक एवला रिएक्शन हो नाही काहे कि उनी एठी कॉपर 2 प्लस कॉपर कन्वर्ट होछि कारण हमें से अनुसार नहीं चे सॉल्यूशन when electrodes as well as your electrolytes are equal ता माने आ कोन होला काम तनु एक क्वेश्चन टाको छाड़ दियो none of these if E0 Zn by Zn2 plus is 0.76 volt and E0 copper 2 plus by copper is 0.34 volt then E0 cell is this 0.42 1.10 minus 1.10 0.76 maximum पिला एटे भूल करंती कोन करंती ना एटा को भाबंती एटा होची कैथोड एटा होची एनोड काहे कि कैथोड भाबंती ये 0.76 अच्छी माने हायर माने कैथोड लोअर माने एनोड ठीक अच्छी तांकर 0.76 रु से माने 0.34 कर दियंती आंसर बाहर 6 रु 4 गली 2 7 रु 3 गली 4 देखन जेतबे ऑप्शन रे नाही तापर नाही ऑप्शन ए अछि तो ऑप्शन ए मारि के पळेसन किंतु एमिति कले तमर आंसर भूल तो सर ताल काई भूल रे बटे प्रकृति रे देखो एटी जिंक 2 प्लस रे कन्वर्ट अछि ता माने एडा होची गोटे SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको बर्तन Zn2 प्लस रु जिंक रे कन्वर्ट हले केता हो देखियो पड़ियो सो E0 Zn2 प्लस बाय Zn कोन हो -0.76 वोल्ट आ कॉपर 2 प्लस बाय कॉपर ठीक अछि 0.34 SRP रे अछि ताले एइडा हबो कैथोड एइडा हबो एनोड तो कैथोड माइनस एनोड ताले कोन हो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड E0 सेल ताले E0 कैथोड वैल्यू केते ना 0.34 माइनस 0.076 तो 0.34 माइनस माइनस प्लस ए जीवो 0.76 which is equal to 1.10 volt तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी तो 44 रो बी हो सठिक उत्तर 45 if n is equal to 2 E naught cell is equal to 1.10 volt then del G naught is approximately del G naught रो वैल्यू केता हो ना this is equal to minus NF E naught cell minus दबा को भूली जीवनी N होची 2 F होची 96500 into E naught होची 1.1 तो 2 5 10 200 को 12 को 13 2 9 18 को 19 into 1.1 1.1 into 97 कितना हो ना 97 3 9 3 12 2 रख रही है 1 1 2 9 2 1 2 so 2 1 2 2 1 2 but it is किलो जूल ऑप्शन नंबर ए होगा सठिक उत्तर
Next, how much charge is required to deposit 1 mole of Ag from Ag plus? Ag plus ରୁ Ag plus हवा पाए केते दरकार एटा जदि हम देखिबा प्लस इलेक्ट्रॉन एटा 1 मोल हमको दरकार 1 मोल Ag ताले 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज करबा 1 मोल इलेक्ट्रॉन माने 1 फैराडे 1 फैराडे माने 96500 कूलम ऑप्शन नंबर ए सटीक उत्तर if k is equal to 1.5 into 10 power minus 2 Simon meter inverse and cell constant is 100 meter inverse conductance केते हो conductance रो फार्मूला conductance होची कोन 1 by r 1 by r होची conductance 1 by r माने kappa रो हमें जो देखबा kappa रो रिलेशन 1 by r into l by e होची cell constant एटा हमें किछ समय आगर करथुले तेनु हमको दरकार conductance माने 1 by r रो वैल्यू kappa होची 1.5 into 10 power minus 2 ठीक अछि आ सेल कांस्टेंट तो दिया छै सो एटा होची कंडक्टेंस माने सपोज c नेली into l by a वैल्यू रहछि 100 ताले c will be equal to 1.5 into 10 power minus 2 divided by 10 power 100 divided by 100 divided by 100 माने 1.5 into 10 power minus 4 ता माने 0.12315 12315 15 by 10 तो जदि हम देखिबा एडी किछ ऑप्शन नाही आंसर कोन अछि ऑप्शन नंबर सी एला भूल अछि तो यार सठिक उत्तर होची सठिक उत्तर हबा कथा ऑप्शन नंबर सी माने आ दीटा 0 ऐड कर दियो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक अछि एटे भूल अछि उत्तर नेक्स्ट देखिबा if 0.5 farad of electricity is passed through copper sulfate solution copper deposited is 0.5 farad पास कराला 0.5 farad माने ध्यान देगी देखो एटा बहुत इजी क्वेश्चन 1 farad जेते बेले हमें डिपॉजिट करछे सेटे 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हुए एटा हमें जानि छे सो 0.5 farad हेले केते हबो ना 0.5 मोल 0.5 मोल माने आधा मोल हाफ मोल ऑफ कॉपर हाफ मोल कॉपर माने जहा तार मास कोन हबो जहा मॉलिक्यूलर मास थिबो डिवाइडेड बाय 2 मॉलिक्यूलर मास केते मॉलिक्यूलर मास होची 63.5 डिवाइडेड बाय 2 so this is 31.75 gram यार भी भूल अछि आंसर ऑप्शन नंबर ए हबो ये भी सटीक उत्तर नहीं which of the following statement is correct regarding molar conductivity of electrolyte it increases with dilution for both strong and weak electrolyte हाँ ठीक अछि it decreases with dilution for weak electrolyte भूल अछि it remains constant for strong electrolyte भूल अछि it depends only on temperature भूल अछि तेणु ऑप्शन नंबर ए सटीक उत्तर हो 50 नंबर जीवा लास्ट क्वेश्चन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक is converted into zinc 2 plus and copper 2 plus is converted into copper and either values are given by here then the EMFs of the cell at 298 Kelvin is test तो यार हम जो देखिबा फार्मूला यूज करिबा that is your next equation is अनुसार E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by 2 into multiplied by log concentration of product रो concentration जानिया गेला हमको सेल रिएक्शन लिखियो पड़ियो सेल रिएक्शन कोन ना जिंक टा जिंक 2 प्लस रे कन्वर्ट होला एवं कॉपर 2 प्लस टा कॉपर रे कन्वर्ट होला तनो सेल रिएक्शन अनुसार कोन होला ना कॉपर और जिंक रो किछि काम नै केवल जिंक 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस काम प्रोडक्ट रे जिंक 2 प्लस आसिला डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रे कॉपर 2 प्लस रहला E0 सेल होची E0 कैथोड माइनस एनोड ऑलरेडी हमें एटा करि सारछे गैल्वेनिक सेल टा तो 1.10 वोल्ट हबो 0.34 minus 0.076 0.0591 divided by 2 log product रो वैल्यू होची केते प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन होची 0.01 divided by 1 तो यार 0.01 माने 10 to the power minus 2
10 to the power minus 2, 1.10 minus 0.0591 by 2 into log constant 10 to the power minus 2 ହେଲା 10 to the power minus 2 ମାନେ minus 2 log 10. This is equal to minus 2 log 10. ता माने इठी हमरो 2 2 कैंसिल आउट हो गला. So 1.10 minus minus plus ହେଲା log 10 रो वैल्यू होची 1 ताले 1.10 plus 0.0591 ता माने एटा केतो 1.1591 which is nearly equal to 1.16. So option number C होगा सटीक उत्तर. Okay, thank you. I hope you enjoyed the class. Thank you again. Adi gote achi according to next equation EMF of a cell decreases with the increasing temperature, reaction quotient, number of electrons, Faraday constant. So next equation of EMF of a cell decreases with increasing. So increasing then देखिबा reaction quotient माने यदि ए वैल्यूटा बढ़िबो reaction quotient is this one. यदि ए वैल्यूटा बढ़िबो ना से सेते कमिबो कारण एटी नेगेटिव पार्ट अछि. सो लॉग पार्टटा सेते बढ़िबो लॉग पार्ट बढ़िले नेगेटिव सेते बढ़िबो नेगेटिव बढ़िले ई सेलटा सेते कमिबो. तो यार सटीक उत्तर होची रिएक्शन कोएफिशिएंट हैना. एटा टिके डिफिकल्ट थिला. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. थैंक यू.